अभी इसके अंदर और एक कंसेप्ट होता है कॉल्ड एज सेपरेट लाइफ पॉलिसी, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। Now, today we would solve one problem. पहले सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर अनसॉल्व्ड पे जाते हैं। पेज नंबर 8.120। Just hold on, I'm taking up my mouse. Page number 8.120. Illustration number 1. The following was the balance sheet of Om and Company, in which X, Y, and Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2:2 as on 31st March 2016. Mr. Z died on 31st December 16. देखो बैलेंस शीट का डेट कौन सा है? What is the date of balance sheet? 31st March. And the partner has died on 31st December. यहाँ पे ही हमको एक क्लियर कंसेप्ट पता चलता है। हमको क्या पता चल गया? यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन है अपने पास। क्या इंडिकेशन है मुझको बताओ आप लोग। इसमें अपने पास एक क्लियर इंडिकेशन ये है कि हमको पता चल रहा है दैट द पार्टनर वाज देयर इन द बिजनेस फॉर 9 मंथ्स। मतलब हमको उसका प्रॉफिट क्या हो गया वापस? वो जो 9 मंथ्स बिजनेस में था उसके प्रॉफिट का कुछ एडजस्टमेंट वहां पे आएगा। उसके प्रॉफिट का कुछ एडजस्टमेंट वापस आएगा।
अचानक से सडनली आ गया ना, बारिश का पानी, बोलो वापस किसी ने चालू किया नीचे। 9 months में वो बिजनेस में था, तो उसको 9 months का प्रॉफिट आएगा, ये इतने स्टेटमेंट पे से ही पता चलेगा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट रहेगा. His account has to be settled under the following terms: balance sheet, trade payables, bank loan, general reserve, capital account of X, Y, and Z, goodwill, building, computers, inventories, trade receivables, cash at bank, investment. Goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase on the basis of average profit of last 3 years. The profits and losses for the last 3 years were detailed as below. Profit, loss. Profit for the period from 1st April 16 to 31st March 16 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit for last preceding 3 years. During the year ending 31st March 16, a car costing rupees 40,000 was purchased on 1st April 15 and debited to traveling expenses account, on which depreciation is to be calculated at 20% per annum. This asset is to be brought into account at a depreciated value. देखो एक एसेट अनरिकॉर्डेड था, तो वहां पे हमको प्रॉफिट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया. अदर वैल्यू ऑफ एसेट्स वेयर एग्रीड एज फॉलोज: इन्वेंटरीज, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट्स. Trade receivables were considered good. Required to calculate goodwill and Z's share in profit of the firm for the period 1st April 2016 to 31st December 16. Prepare revaluation account, assume that other items of assets and liabilities remain the same. Prepare partners capital account and balance sheet of the firm Oman Company as on 31st December 2016. Okay. So let us go ahead to solve the problem. Pehla, revaluation account in the books of Om and Company. Revaluation account. Okay. Partners capital account. The partners are X, Y, Z. Then cash और बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे उन्होंने अपने को दिया है बैंक, कैश एट बैंक दिया, तो इट इज बैंक अकाउंट. बैलेंस शीट, okay. Balance sheet after death
as on 31st December 2016. Okay. The first step, what we will do is we'll transfer old balance sheet to new balance sheet. Trade payables, $20,000, bank loan 50,000, general reserve we will distribute it. It will always be distributed among the partners. फिर capital account दिया है, so we'll go to capital account X 40,000, Y 80,000, Z 80,000. Goodwill is appearing in the balance sheet. तो रूल क्या बोलता है, मैंने आपको रूल बताया था. गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, क्या करना पड़ता है हमको? व्हाट डू वी डू टू द बैलेंस शीट गुडविल? The goodwill appearing in the balance sheet, what do we do? We always write it off under the provisions of accounting standard number dash. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 राइट ऑफ कर देंगे, तो वो डायरेक्ट कैपिटल के डेबिट में टू गुडविल अकाउंट, उसको राइट ऑफ ही कर दो, डायरेक्टली राइट ऑफ कर दो. 30,000 डिवाइडेड बाय 5, 6,000 into 1, 6,000, 12,000, 12,000. Is this clear to all of you? किसी को कोई डाउट है? फिर बिल्डिंग 1,20,000, computers 80,000, inventories 20,000, trade receivables 20,000, cash at bank 20,000 will go to bank account. Amount is 20,000. वो इग्नोर करना, आप लोग बैलेंस वो अपने आप आ रहे उधर से. इन्वेस्टमेंट्स 10,000. मैंने फॉर्मूला डाला है करके वो उधर आते रहेगा, वो बैंक बैलेंस अपने आप चेंज होगा. नाउ next step, distribute accumulated profit. It is there by जनरल रिजर्व. रिजर्व्स का अमाउंट है 30,000, तो सेम लाइक गुडविल का अमाउंट आ जाएगा 6,000, 12,000, 12,000. 1:2:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया उसको मैंने. कोई डाउट? अभी
Distribute accumulated losses, not there. Deal with adjustment. Goodwill to be calculated on the profits of, to be calculated at the rate of 2 years purchase of average profit of last 3 years. तो वर्किंग पे जाते हैं. Okay. 31st March 14. First March 14. First March 15. 31st March 16. ओके. अभी उन्होंने अपने को प्रॉफिट्स दिया है. -10,000. इसका दे दिया है 20,000 और इसका दे दिया है 30,000. ओके. अभी आगे हमको इसमें क्या बोला है, that 2016 में car costing was debited to traveling expense. तो add हमने वो जो है कार परचेज डेबिटेड टू, मतलब वो डेबिट किया, मतलब इसमें से माइनस हो गया था तो वो ऐड बैक किया हमने 40,000. लेस depreciation at the rate of 20%. तो इधर तो वो था नहीं कार, इधर भी नहीं था. अभी 40,000 का 20%, 8,000. So we will get is a revised average profit. So revised profit. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स,
एंड मॉक टेस्ट, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। तो टोटल कितना हो गया? We got 72,000 as the total profit. Therefore, average profit is equal to 72,000 divided by 3. I got 24,000 mila. Therefore, goodwill is equal to average profit multiplied by 2 is equal to 24,000 multiplied by 2. I got 48,000. Do you get that? So goodwill 48,000 पूरे फॉर्म का। Therefore, अभी उसमें एक्सपायर कौन हो गया? Z. Therefore, Z's share is equal to 48,000 multiplied by Z का शेयर कितना था? 2/5. I got 19,200. Do you get that? तभी ये 19,200 मैंने आपको बताया था हम डायरेक्टली एडजस्ट करते हैं इन द पार्टनर इन विच रेशियो? गेन रेशियो। तो उसका एंट्री क्या रहेगा? याद है आपको कुछ? मैंने बताया था, आपको बताया था मैंने क्या करना है कि वो जो 19,200 Z का है वो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिटेड टू एक्सपायरिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर है X कैपिटल डेबिटेड, Y capital debited, to Z capital, X capital debited, Y capital debited, Z to Z capital 19,200. This 19,200 would be in the new in the gain ratio जो दिया नहीं है, मतलब it is equal to the new ratio. So 19,200 divided by 3 multiplied 1 is equal to 6,400 for X and 12,800 for Y. इसका फर्स्ट इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू Z's कैपिटल अकाउंट। X के अंदर 6,400, Y के अंदर 12,800, Z में 0। और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट साइड में बाय
X capital account by Y's capital account. In a Z, it could be 6,400, 12,800. Is that okay? यहां तक कोई डाउट है किसी को? फिर आगे बोला है दिस, वो जो कार वाला एसेट है, इज टू बी ब्रॉट इनटू द अकाउंट. इट इज टू बी ब्रॉट इनटू द अकाउंट. अभी जब हमने वो जो है प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया, मतलब हमको रिवैल्यूएशन में उसका इफेक्ट नहीं देना है. अगर आप रिवैल्यूएशन में उसका इफेक्ट दोगे तो रॉन्ग होगा. हमने उसको प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट कर दिया. तो बैलेंस शीट में हम जाएंगे एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड में सिर्फ लिख देंगे कार. डिप्रिसिएटेड वैल्यू पे आ जाएगा क्योंकि हमने पहले वो 40,000 ऐड किया और 8,000 लेस किया, तो डिप्रिसिएटेड वैल्यू 32,000. इज दैट ओके? फिर इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट 16,000. इन्वेंटरी का वैल्यू है 16,000. नया वैल्यू, पुराना वैल्यू था 20,000, तो 4,000 कम हो गया. लेस रिवैल्यूएशन 4,000. और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम जाने देंगे टू इन्वेंटरीज अकाउंट 4,000. फिर बोला है बिल्डिंग एट 1,40,000. बिल्डिंग का नया वैल्यू है 1,40,000. पुराना वैल्यू था 1,20,000, तो 20,000 बढ़ गया. तो एड रिवैल्यूएशन. एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट 20,000. कंप्यूटर्स एट 50,000. कंप्यूटर का नया वैल्यू है 50,000. पुराना वैल्यू था 80,000, तो 30,000 से कम हो गया. लेस रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू कंप्यूटर्स अकाउंट 30,000. इन्वेस्टमेंट्स 6,000. इन्वेस्टमेंट्स लेस रिवैल्यूएशन 4,000. आउटर कॉलम में 6,000. एसेट का वैल्यू कम हो गया तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड 4,000. ट्रेड रिसीवेबल्स वेयर कंसिडर्ड गुड, तो उसमें और कुछ भी नहीं है इफेक्ट. ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर. नाउ वी गो अहेड टू टैली द अकाउंट. हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 38,000 है. 38,000 है माइनस 20,000, 18,000 हमको लॉस हो गया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड. 18,000 divided by 5, 3,600, 7,200. Do you get this amount? कोई डाउट है इसमें? आपको मिले कि ये अमाउंट? ये इधर क्रेडिट में है
तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा टू revaluation account 3,600 7,200 7,200। अभी हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, मगर हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भूल गए। हमने जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं किया, तो पहले वो कर देते। सॉरी, वर्किंग नोट नंबर 2, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। आगे देखो कैसे बोला है, ऊपर एक जगह पे बोला हुआ था, द प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st April 16 to 31st December 16 shall be ascertained proportionately on the basis of average profits and losses of preceding 3 years। तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला इज इक्वल टू बेस प्रॉफिट multiplied by this is partner share multiplied by duration upon 12। हमको बेस प्रॉफिट तो पता है 24,000 multiplied by 2/5 multiplied by 9/12। I get is 7,200। तो उसका जर्नल एंट्री आता है, याद है 12th में हमने इसका जर्नल एंट्री किया था। क्या जर्नल एंट्री रहेगा? 12th स्टैंडर्ड में इसका जर्नल एंट्री सिखाया था मैंने, एक्सपायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। जर्नल एंट्री वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड profit and loss suspense account debited to expiring partners capital account। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट P&L सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, हमने बनाया नहीं है। दूसरा कैपिटल के क्रेडिट में बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, X में 0, Y में 0, Z में 7,200। ओके, एंड P&L suspense account shall be shown separately into the balance sheet। तो इधर अलग से हम लिख देंगे P&L suspense account 7,200। अभी हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट का रूल बोलता है हम सबसे पहले जो पार्टनर एक्सपायर हो गया है उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। द कार इज ब्रॉट इन टू द बुक्स, कार बिलोंग टू ऑल पार्टनर। तो इधर आ जाएगा बाय कार, तो वो प्रॉफिट उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो पिछले साल का प्रॉफिट बढ़ेगा वो उनके अंदर आ जाएगा। राइट, पिछले साल का प्रॉफिट बढ़ा तो इनका कैपिटल भी बढ़ा रहेगा,
तो कितना था 32,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड 1 6,400 12,800 12,800 प्रॉफिट बढ़ाया, उसका इफेक्ट कैपिटल में देना हम भूल गए थे। तभी जेड का अकाउंट पहले क्लोज होगा। Z's executors account या executors loan account 00 is equal to 1,31,200 minus total of debit side, that is 19,200. So we got 1,12,000. बैंक लोन के बाद में Z's executors loan account 1,12,000. अभी दूसरे पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन इज इक्वल टू 52,400 माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड आई गॉट इज 36,400 एंड इसका आ जाएगा 72,800 और इसका आ जाएगा 0 और यही बैलेंस शीट में चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट एक्स वाई, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, आउटर कॉलम में इसका टोटल 1,09,200। फिर इनर कॉलम की जो चीजें हैं वो हम आउटर कॉलम में ले लेते हैं। इधर 0 है, 0 है, 0 है, तो इधर 20,000 50,000 and इधर 20,000. So see the balance sheet tallies at 291,200. बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो जो इससे था वैसे वो आ गया। So this is a revaluation account. Partners capital account. Bank account. Balance sheet. देखो कार क्यों आएगा कैपिटल अकाउंट में। अभी यहाँ पे वर्किंग नोट में आओ, देखो यहाँ पे हमने ये पिछले साल का उनको जो भी प्रॉफिट हुआ था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना बता रहा था 30,000, बराबर है। तो वो 30,000 उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, बट उसके अंदर एक एक्सपेंस हमने डाल दिया था, कैपिटल एक्सपेंस डाल दिया था, जिससे 40,000 प्रॉफिट कम हो गया था। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना था उनका, देखो रिवाइज प्रॉफिट 2016 का रिवाइज प्रॉफिट कितना था देवाशीष? $62,000 हमने प्रॉफिट कितना डाला था, और पिछले साल उनके प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहेगा उनको, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? 30,000। तो 32,000 रुपीज से प्रॉफिट बढ़ा। ये किस चीज का प्रॉफिट है? कार का ना। 40,000 का कार माइनस
8,000 डिप्रिसिएशन। इसके लिए वो प्रॉफिट हमने उनको जनरेट करके दिया। अभी वो कार हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाया, वो पिछले साल रिकॉर्ड नहीं हुआ था, उसको एक्सपेंस करके डाल दिया था। इज दैट क्लियर नाउ देवाशीष? Okay, is there any doubt with respect to the problem today? So now I'm ending up my lecture for today. I again will meet you in the afternoon at 2:45, right? I'm taking one more lecture for you today. 2:45 को विकास सर के लेक्चर की जगह पे आज मैं ले रहा हूं लेक्चर।